everyone. Good morning, Bhagyashri. Good morning, Khushi. Good morning, Dharmantra. Good morning, Nitin ji. Good morning, Bhakti, Pragati, Manvi, Swarupa. Good morning to all of you. Good morning. I'm so happy to see you all in this morning, early morning, and give yourself a big pat. Good morning. Yeah, good morning. Please, you can give yourself a big pat that even in the morning, early in this morning, 5:30 a.m., you guys are here. That shows definitely how much you want to change your life. And believe me, this is the only thing which will change your life. Okay, can I just request all of you to please switch on your cameras because this is not a life coaching, this is a healing. And for me, having that knowing that whom I am talking, having the face and knowing the person is very important because this is healing and not life coaching जहाँ पे हम लोग ऑडियो में भी काम चला सकते हैं. So please request all of you to please switch on your cameras if possible, so that I also know I have to take each and everybody's intention into my mind while giving the healing. So please switch on the cameras. Good morning, Swarupa. So happy to see you. Good morning, Dharman. Good morning. Good morning. Good morning, Bhakti. All right. So I'll just wait for one more minute to join other people if they are. And let me share. Before wasting time, let us just quickly jump start to our sessions. And yeah, one more request to each and everyone, please mute your own self. अगर आप अपने आप को mute कर लीजिए अपने आप को, I'll definitely give a chance ताकि हम लोग unmute हो सके और we can talk it out. But just because once the healings are going, let us not मतलब disturb each and anybody, किसी को disturb ना करेंगे. दूसरा चीज ये है कि अगर आपको मेरी तरफ से आवाज नहीं आ रही है, गुड मॉर्निंग प्रगति, so good to see you. अगर मेरी तरफ से आपको आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज चेक इट आउट फ्रॉम योर एंड, बिकॉज अगर बाकियों को सुन रहा है तो आई एम 100% श्योर आपको भी सुनना चाहिए. आपने चेक अपने डिवाइसेस आप चेक कर सकते हैं. जैक आपने जो जैक लगा है वहां पे कुछ भी या फोन में कुछ इशू, यू कैन जस्ट चेक आउट फ्रॉम योर एंड. और अगर सबको नहीं आ रही होगी तो डेफिनेटली आई विल चेक फ्रॉम माई एंड, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरी तरफ से ही गड़बड़ है. जस्ट डू लेट मी नो. ऑन दैट नोट, आई विल जस्ट simply jump start on our healing sessions, and most welcome to be on this part of this journey. Okay, I'm sure you are able to see my screen. Show thumbs up, or you can type into the chat box if my screen is visible to you. Okay, all right. So welcome all on this 5-day bootcamp of healing. I'll make sure that you guys are having the biggest of the breakthrough in this 5 days. Number one thing, in this healing journey, you will realize कि आपको क्या चीजें हैं जो stop कर रही हैं. There are different 4 or 5 different modalities. As a healer, I know. So definitely, I'll be sharing all those things. And each and every day there will be different healing modalities. Healing modalities right from Ho'oponopono to inner child to chakra balancing to Reiki healings and to the giving money energy to your, our financial freedom, because financial freedom is something which we all want. So from today to next 5 days, be assured that you are gonna have the biggest, eye-opening sessions of your life. So coming back to the thing, what is inner child and why it is important? Today's is, the session is planned in for inner child healing. Now, please remember one thing. I don't know whose it is muted. There is, please mute your own self. I just request you humbly, please mute your own self. Just check it from your end. Okay. जब भी, we as a human represent our body as a tree. हम लोग human की life को tree से compare करोगे. At that point of a moment, okay, what happens is that हमारे जो roots होती हैं, the tree जो होता है वो मजबूत क्यों होता है? Why the tree is always so strong and so long living or whatever we think, is that because tree is always having the grounding of energies. वो पानी अर्थ से लेता है, पानी लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, सब कुछ लेता है, पत्तों में जाता है, पत्तों से ट्रांसपिरेशन हो जाता है, आसमान में चला जाता है, आसमान से बरस के बन के बारिश बरस के वापस से नीचे आता है. So this is how the tree is. That's the reason tree में जो होता है हम लोगों की एनर्जी, ट्री की एनर्जी हमेशा बैलेंस रहती है, right from the root to the top of the head. But what happens we as a human being? Just imagine कि अगर उस ट्री के अंदर जो ट्रांसपिरेशन सिस्टम है, जो पानी का सिस्टम है, जो अब्सॉर्ब करने का सिस्टम है, अगर वो गड़बड़ हो जाए तो होता है ट्रीज के अंदर प्रॉब्लम आना.
तो होता है ट्रीज प्रोडक्टिव नहीं होते हैं. सेम इज द केस विद अवर ह्यूमन बॉडी. सेम इज द केस विद अस ऑल्सो. वी आर अवर नॉर्थ, ये हमारा जो सर होता है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अवर नॉर्थ पोल. डेफिनेटली फीट रिप्रेजेंट अवर साउथ पोल. So we humans are also energy. We all are made up of atoms. We all are made up of energy. We all are made up of प्रोटॉन न्यूट्रॉन. अगर आपने साइंस पढ़ी है तो नहीं मतलब नहीं कि साइंस का स्टूडेंट रहे तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबके अंदर है कि डीप डाउन एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर मेड अप ऑफ एनर्जी. एंड दीज एनर्जीज आर मेड अप ऑफ आवर इमोशंस, आवर सर्कमस्टांसेस, आवर एनवायरमेंट, हाउ वी आर. तो जब पेड़ खराब होता है, whenever there are fault in the leaves, if the leaves are faulty into the leaves, we don't go and fix the leaves. हम सिर्फ ऊपर ऊपर लीव्स के ऊपर ही स्प्रे करके उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं. what we do, we go to the roots and try to fix it. हम लोग रूट्स को जाके फिक्स करने का ट्राई कर रहे होते हैं. and that is the reason why healing is important. that is the reason why energy balancing is required. इन ह्यूमन फॉर्म हम जो ट्रीज होती हैं, जो ट्रीज की रूट्स होती है, द रूट्स रिप्रेजेंट आवर सोल. हमारी जो सोल है ना, वो हमारे रूट्स रिप्रेजेंट करती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ट्रंक होता है, मतलब द एनवायरमेंट विच इज देयर, द ट्री रिप्रेजेंट आवर फिजिकल बॉडी. जो ट्रंक होता है ट्री का, हमारी जो बॉडी होती है वो फिजिकल बॉडी रिप्रेजेंट कर रही होती है. और जो पत्ते होते हैं ट्री के, वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर वो सॉइल में खराबी है, अगर वो सॉइल के अंदर पत्थर है, कंकड़ है, अच्छी मिट्टी नहीं है, इन शॉर्ट इन्वायरमेंट खराब है, पेस्टिसाइड्स डाले गए हैं, फर्टिलाइजर्स डाले गए हैं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा डाला गया है, तो वो ट्री कभी ब्लॉसम नहीं कर पाएगा. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो एंड फिक्स द सॉइल. सेम वे हमारी जो सोल है, जिसमें हमारे इमोशंस डाले गए हैं, हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारा क्या रहा है, हम कैसे बड़े हुए हैं, हाउ वी हैव ग्रोन अप इन टू लाइफ, व्हाट लाइफ एक्सपीरियंसेस वी हैव, हमारी सराउंडिंग कैसी थी, हमारा सोशल सर्कल कैसा था लाइफ में, व्हाट इज द ब्रेन वायरिंग, हमारी वायरिंग क्या हुई है. तो वो सारा का सारा इन्वायरमेंट होता है. अगर इन्वायरमेंट अच्छा होता है, वी ब्लॉसम एंड फ्लरिश इनटू द लाइफ. If we don't blossom and flourish into the life, तो we will not be able to grow as we wanted. और वो फीलिंग जो होती है हमारे अंदर स्टक फीलिंग लेकर आती है, बिकॉज वी ऑल वांट टू ग्रो इनटू द लाइफ. एंड अगर आप मतलब जैसे ट्री के एनवायरनमेंट में कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी में वो सारा मिला हुआ है, तो कभी ना कभी वो ट्री के अंदर भी आएगा ही आएगा. सेम वे अगर हमारी बॉडी के अंदर ये सारा टॉक्सिन्स भरा पड़ा, जो एक्सपीरियंसेस है, जो इमोशंस है, जो स्टक्ड इमोशंस है, जो लिमिटिंग बिलीव्स है, जो हर्ट है, जो गिल्ट है, जो सैडनेस है, ये सारे के सारे एक तरह के हमारे इन्वायरमेंट है, जो हम मतलब इमोशंस है हमारे अंदर आए हैं ड्यू टू इन्वायरमेंट. अगर हम इनको हील नहीं करते हैं, तो कभी ना कभी वो हमारे ऑर्गन्स पे आता है. मतलब जैसे वो ट्री की पत्तियों के ऊपर आता है, वैसे वो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स के ऊपर आता है. एंड दैट इज द रीजन वी सफर फ्रॉम डिजीजेस. एसिडिटी होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, ओबेसिटी होगा, थायराइड होगा, किडनी फेलियर होगा, एक्सट्रीम केसेस में हार्ट अटैक हो जाएगा, माइग्रेन हो जाएगा, पीसीओडी हो जाएगा, पीसीएस हो जाएगा. एंड एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड में जाता है, पीपल सफर फ्रॉम कैंसर एंड द डेडलीस्ट डिजीज, just because they were not able to connect and correct their soul. So in the whole journey of this healing process of 5 days, definitely this is just a boot camp I cannot give, because healing takes time. Healing definitely take time. Whatever your age are, just imagine your own self कि इतने साल की healing करनी है, इतने साल के experiences जो हमने दिमाग में लेके बैठे हैं, इतने साल का जो हम लोग hurt, जो guilt और सेल्फ सैबोटाइजिंग जितने भी लो है, फियर है, डर है, डाउट है, ये सारे के सारे लेके बैठे, तो इट टेक टाइम टू हील. बट आई विल मेक श्योर डेफिनेटली कि इन द नेक्स्ट 5 days एटलीस्ट द एनर्जीज आर अनब्लॉक. कहीं ना कहीं से रास्ता आपका निकलने ही वाला है, दैट इज 100% श्योर. so this is what why we need healing. इसलिए जरूरी हमारे healing क्यों जरूरी है, that is the reason I just wanted to tell you. now signs of a physical healing, just imagine yourself, I'll just put it here. okay, now if you are feeling physical signs that you need healing, मैं किसी को ऐसा मतलब बहुत लोगों का आप वी यूज्ड से कि नहीं हमें नहीं लगता है हमें healing की जरूरत है and all that stuff, but these are the physical signs that you need a healing. why you need a healing? if you are suffering from depression, अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, if you are feeling depression, then definitely you definitely need healing. if you feel unmotivated, अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं करना है, you're just spending your time on bed or social media or just slaying on the couch and just like that, just simply passing your time,
then definitely you need healing, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एनर्जी स्टक्ड है, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस है जो आपको प्रोडक्टिविटी में नहीं इंक्रीज कर रहे हैं, जो आपको आउटपुट नहीं लाने दे रहे हैं. You know, if you want to have more and more time alone or with friends, avoiding meeting in different ways. If you are not at all a social person, आपको कहीं से भी कोई भी इनविटेशन आ जाए, आपको सबसे पहले लगता है कि मुझे नहीं जाना है यार, मुझे अकेला छोड़ दो. Just imagine how many times in a day you tell to your own self कि मुझे अकेला छोड़ दो यार, मुझे अकेला अच्छा लगता है. If that is the sign, if that is the feeling you are having, then definitely you need a healing. Reason is that your heart chakra is blocked. Feeling unmotivated, again, you know, your solar plexus is blocked. That is the reason you don't feel motivated. Depression तो सबका block, मतलब सबका सारा result ही आता है. You don't have emotional connection with your partner. You are staying with your partner or with your parents or with, you know, somebody, आप किसी के साथ तो you are sharing the roof, right? If you don't feel emotionally connected to them, again a sign your heart chakra is blocked and you need a healing. Sleep difficulties, definitely people end up into insomnia and anxieties because of इतना सब कुछ सोच, नींद ही नहीं आती, रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं, सो पा नहीं रहे. उनका दिमाग, एक दिमाग उनको बोल रहा है सो जाओ सो जाओ सो जाओ, बट कहीं ना कहीं से इनर वॉइसेस आ रही है, उसने ऐसा बोल दिया, इसका क्या हो गया, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं किया था. यू नो दैट कन्वर्जेशन इज गोइंग इनटू योर माइंड एंडलेसली. दैट इज द साइन दैट यू नीड अ हीलिंग. वेट गेन और लॉस, डेफिनेटली टोटल रिजल्ट है आपका. आप क्या खा रहे हो और कितना स्ट्रेसफुल में खा रहे हो, इसका सिंपल साइंस पढ़ लो. ओबेसिटी इज द एग्जांपल, हाई बीपी इज द एग्जांपल, हाई कोलेस्ट्रॉल इज द एग्जांपल ऑफ ऑल दिस थिंग्स. यू नीड अ हीलिंग. नॉट एट ऑल फोकस और प्रोडक्टिव एट वर्क, ध्यान कहीं और है. बॉस कुछ बोल रहे हैं, हस्बैंड कुछ बोल रहे हैं, वाइफ कुछ बोल रही है, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो. तब उठ के पूछते हो, अरे क्या बोला, रिपीटेडली. या फिर यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन वन टास्क. अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं. ट्रिगर 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 ट्रिगर, एंड अल्टीमेटली यू फील सो ओवरवेल्म्ड, यू एंड अप डूइंग नथिंग. और फिर खुद को क्रिप भी करो, तो मेरा दिन तो पूरा खराब था, मैंने तो आज पूरा दिन कुछ नहीं किया. देन यू नो, दिस इज द डायलॉग. इंक्रीज एंग्जाइटी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, डेफिनेटली आपका हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, मनी बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, करियर अच्छा नहीं रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा. दीज आर द 4 मेजर एरियाज. अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल 8 होते हैं, बट ये 4 पूरे उधर उधर हिले रहेंगे. एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड फोकस, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन एनी सिंगल थिंग. 5 मिनट भी मैं बोलूंगी आंख बंद करके बैठो, तो 5 मिनट में बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा. दिमाग में इतने ख्याल आएंगे, इतने वो होंगे कि यू माइट एंड अप टेलिंग आई जस्ट कैन नॉट क्लोज माई आईज and think nothing. वो zero state कभी नहीं आएगा. You don't feel connected. These are the physical symptoms of healing. Okay, that जो हमारी manipulate होती है. Now, ये सारा का सारा जो आ रहा होता है वो इनर चाइल्ड हीलिंग से आ रहा, मतलब इनर चाइल्ड हीलिंग इज, यू नो, हमारे बचपन से कहीं ना कहीं से आ रहा था. एनीबडी हु इज नोन, बिकॉज फ्यू पीपल आर फ्रॉम माय कम्युनिटी आल्सो. कैन यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर चाइल्ड हीलिंग? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर चाइल्ड? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर चाइल्ड? Anybody can unmute. And there are many of the people who are joining me second time. I'm so happy that you are here again for the second time. And my sessions are always different. First time जो है वो second time दोबारा repeat नहीं होना है, तो you will always be a gainer. I'm so happy that you are here. So please, anybody can unmute your own self and tell me what do you mean by inner child? और दिस इज द फर्स्ट टाइम. आप ये भी बोल सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, आई नेवर, यू नो, मैंने कभी इससे पहले टर्म सुना ही नहीं है. Yeah, ma'am, Nitin this way. Yeah. So maybe I think inner the feeling which we are talking about, it is about our experiences, our feeling throughout the childhood which we have gained because of the environment, because of the society, and because of our own experience in the childhood. That impression which we are carrying till the young age or the adult age. I think that is what Yes, we. yes, that is almost correct. मतलब 90% आप सही चल रहे हो. Anybody else or anybody who just tell कि ये नया experience, मतलब मैंने कभी सुना ही नहीं है. You can also even tell me. Reason is that why I'm asking, I need to know कि हम लोग ये, because this is a group, you know, this is a cosmopolitan group. I need to know कि सब लोग कौन सी frequencies पे हैं. There is something in the chat. Anybody can unmute and tell me. Bhagyashri, okay. Yes, Bhagyashri, Swarupa, anybody? And Bhakti, Khushi.
First time I'm doing this. Okay, okay, no, it's Me also. all right, Bhakti, no worries. Khushi, first time hearing? Yes, ma'am. Okay. Uh, No, I don't hear it first time. I uh, I think the inner child means the beliefs which we have in our mind due to our childhood experiences or childhood environment because of our parents and teachers in school and friends. that's true. That's you are also right. Almost 90% time. Okay, Pragati, Dhamandra, Manvi, Jasvi, Shweta. Happy to see you again, Shweta. Okay, Shweta. Anybody who is telling what do you inner child? Okay. If you want to tell, you can just unmute yourself and tell, because the more we will share, the more we all will learn. This is, first of all, this is not a classroom कि जहाँ पे मैं ही पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को सीखना है. I am just a moderator. I am sure you are also coming with your experience. Second thing, the more you will share, the more other person will be learning. जब आप मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो आप आप सब लोग सीख रहे होंगे. सेम में जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो सामने वाले को भी हीलिंग मिल रहा होगा, सामने वाले को भी वो पता चल होगा, अच्छा हाँ मैंने भी तो ऐसे एक्सपीरियंस किया था. तो प्लीज एज ए कम्युनिटी बीइंग, बिकॉज वी आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. ठीक है, आप सबने एक ग्रुप ज्वाइन किया है, दैट इटसेल्फ शोज दैट वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. So being a community, it is our moral responsibility to help each other. I am helping you to grow, you help me to grow. You help your partner to grow. So please make sure that you keep on sharing your things. Be open. This is a very non judgmental space. This is a very safe place. This is a very safe world. And this is a healing. No need to feel ashamed. No need to feel, कि नहीं मैं क्यों share नहीं करूँगी. Because believe me, if you are feeling ashamed, if you are feeling मैं नहीं शेयर करूंगी, दिस इज द ब्लॉक यू नीड टू हील, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी इनर चाइल्ड से आ रहा है. इनर चाइल्ड हीलिंग इज समथिंग, इट्स द लिटिल इनर वॉइस इन यू. आपके अंदर जो हमेशा, जो मैंने बोला, सोते रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, या वही डायलॉग आता रहेगा, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, अरे मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो मुझे क्यों लेंगे, आई एम नॉट वर्थ इनफ, फॉर एग्जाम्पल. या मैं तो अच्छा खाना कभी बना ही नहीं सकती हूँ, या तो मैं कभी अच्छी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती हूँ. दैट इज द इनर वॉइस, दैट इज द इनर चाइल्ड. इनर चाइल्ड हीलिंग मीन्स हमेशा वो आपके बचपन में ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो हमें नहीं पता है, हम सब भूल चुके हैं, मैं भी भूल चुकी हूँ. बट द मोर आई एम गोइंग इनटू दिस मोडालिटीज, द मोर आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न्स. तो बचपन में हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसका हमने एक मीनिंग बना लिया है, जिसको एक उस वक्त हमें इमोशनल्स हमारे ट्रिगर हुए होंगे, तो हम वो चीज भूल चुके हैं क्या हुआ, लेकिन उसके इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में कैप्चर कर लिए गए हैं. ठीक है, अब वो इमोशंस कैप्चर कर लिए गए हैं, तो हम हमारी पूरी की पूरी लाइफ उसी से ऑपरेट करते हैं. नेक्स्ट टाइम जब भी वो कुछ आता है, वी जस्ट एंड अप बिलीविंग दैट वे एंड ऑपरेटिंग आवर वॉइस दैट लाइफ दैट वे. दैट्स व्हाट इनर चाइल्ड हीलिंग इज, क्योंकि बचपन में वो दिया गया है. सबसे लिमिटिंग ब्लॉक्स होता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है. किस किस ने सुना है? जस्ट प्रेस योर हैंड और टाइप इन द चैट बॉक्स. पैसा कमाना बहुत मुश्किल है. लक्ष्मी आने से पहले ही चली जाती है. लक्ष्मी आने से पहले जाने का रास्ता बनाकर लेके आती है. पैसा क्या पेड़ पे उगते हैं? इट इज नॉट इजी टू गेट सक्सेस. अमीर लोग हैं वो तो लकी हैं, तुम इतने लकी नहीं हो, क्योंकि तुमने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आए. यू विल एंड अप टेकिंग दैट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस. साइंस नहीं ली तो तुम राइट स्टूडेंट नहीं कहलाओगे. हाउ मेनी हैव यू हर्ड लाइक दैट इन योर चाइल्डहुड? These are some of the commonest beliefs. Yes, yes, yeah. Thank you, Pragati. And be interactive, guys. I know this is a little bit early, but yes, Bhakti. Okay, yes. Thank you, thank you. You can share into the chat box also. You can unmute your own self also. Okay, and या तो फिर you are not capable of being successful. तुम तो बुद्धू ही हो, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा. How many times you have heard these sentences from your parents? Just you can put it into the chat box, or if not, please keep it into your mind. So inner child healing deals with the little inner voices in your mind which always tell you that Pragati, yes, it's very common. Yes, it is very common, and we have been part, even I have been the part of the same upbringing, and this was the major block in my growth journey. फिर जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, अपने आप को heal करना शुरू किया, then at that time I got to know, oh, this was not at all my fault. Okay, so this inner child healing जो होता है हम लोगों का, it is coming from our father and mother. Okay,
one thing, please make sure mother and father here doesn't mean आपकी mother और आपकी father ही है. It could be interchangeable also. Motherhood and fatherhood हम लोग बोल रहे होते हैं कि और उस कि जब मम्मी के साइड का कुछ बिहेवियर हो रहा होता है, फादर के साइड का कुछ बिहेवियर हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ उस हिसाब से ऑपरेट कर रहे होते हैं. बट ये बिहेवियर दोनों पेरेंट्स में हो सकता है, या तो फिर वो पेरेंट या मदर का बिहेवियर फादर में भी हो सकता है, फादर का बिहेवियर मदर में भी हो सकता है. एंड द वुंड डजंट मीन एक्चुअली वुंड, मतलब वुंड का यहाँ पे मीनिंग नहीं, वुंड का मतलब उनके बिहेवियर, उनके एक्शन की वजह से वी गॉट वुंडेड अप, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो फॉल्ट ऑफ देयर. उनका खुद का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग भी इसी कंडीशन में बॉर्न हुए हैं, वो लोग भी ऐसे ही कंडीशन हुए हैं. जस्ट लाइक दैट, यू नो, आई जस्ट प्ले द प्रीवियस स्लाइड, यू नो, इट इज अवर इनर चाइल्ड. हम लोग का हमारा डीएनए पास होता है मदर एंड फादर का, एंड वी गेट एज अ किड, वी गेट द डीएनए गुड जीन्स फ्रॉम मदर एंड फादर. हम लोग को सब कुछ हेल्थ मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा था. तो ड्यूरिंग दैट टाइम इवन द ट्रॉमास हैज बीन पास्ड ऑन, इवन यू नो every single thing is passed on from the same egg and the same sperm. So during the umbilical cord, अगर जब umbilical cord form होती है, जब बच्चा born, मतलब you know it is in the mother fetus, तो जैसे मम्मी जो होती है, मम्मी बोलते हैं ना माँ अच्छी रहेगी, माँ न्यूट्रिशन दे रही होती है, तो द किड डजंट ऑब्जर्व ओनली द न्यूट्रिशन. वो जो umbilical cord बनी हुई है वहां से सिर्फ वो न्यूट्रिशन ऑब्जर्व नहीं करता है, वो वहां से लाइफ का एक्सपीरियंस, ट्रॉमा, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है डिपेंडिंग ऑन मदर्स कंडीशन. एंड द child is born with those things. इसलिए बोलते हैं generational traumas, that the word is again there in this inner child healing, that is generational traumas. जैसे डिजीज पास हो रही होती है ना, डायबिटीज हो रहा होता है, बहुत कॉमनली आप सुनोगे यार मेरे मम्मी को भी पापा की, तो मेरे को तो होना ही होना है. हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं उसको, वी डोंट फील लाइक ब्रेकिंग द, यू नो, चेन ब्रेक नहीं कर रहे होते हैं. तो इन शॉर्ट दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इनटू द इनर चाइल्ड. इनर चाइल्ड के टाइम पे हम लोग का वो हो रहा होता है. So if your mother, you know, if your mother is very critical, if your mother or father, it could be anything, anybody, if they are being critical, then the person, the people have, you will have a loud inner voice. तुम अच्छे नहीं हो. How many times have you did something, आपने पूरे दिन में आप अपनी सक्सेस कितनी बार सेलिब्रेट करते हो और अपनी फेलियर्स कितनी बार सेलिब्रेट करते हो? How many times in a day? Anybody can unmute. You all are here today at 5:30 in the morning. This is the success for you. You already won a day. बहुत सारे लोग अभी तक सो रहे हैं. They are not at all there awake and making a progress into your life. But how many of you are ready to celebrate your success of waking up at 5:30 in the morning and attending some sessions which will help you to grow? Versus, यार मैंने तो आज काम नहीं किया. How many, how is that, you know, how many times you feel? And this happens, you know. Okay, who is the one in the chat? Okay, yes, since rise and shine I started to celebrate my success in small and victory. Oh, that's very nice. Yes, that's very good that you're already coming from a, you know, mindset journey. Oh yes, that's very important. Okay, and it is okay, let's close the chat. Yeah, coming back to the mother wounds. अगर mothers या father बहुत critical रहे, you will have a loud inner critic voice. You हमेशा खुद को कोसते रहोगे, छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी अपने आप को कोसते रहोगे. If your mother was unapproving, how many times have you felt कि तो मदर और फादर आप 90% मार्क्स लेकर आए हो, लेकिन मम्मी पापा बोल रहे हैं कि यार वो शर्मा जी के बेटे को देखो 95% है, तुम इतने क्यों लेकर आए? तुम 60% मार्क्स लेके आए हो, इतने क्यों लेके आए? हमने तो तुमसे इतने एक्सपेक्ट किए थे. How many times you feel that or heard that into your childhood? Just giving you example of education. How many times you have performed into the sports, you might have end up into second, you know, rank or third rank, or you might have not even won that particular thing. How many times you have felt कि मम्मी पापा ने सुनाया है घर पे? How many times घर पे यार इतने मार्क्स आ गए, मार पिटने वाली है? Because my childhood was like that. इतने मार्क्स है, my father was damn strict about studies. मार्क्स कम आएंगे बराबर का धोएंगे वो. How many times? And that is the reason I end up, you know, having the fear of judgment. That if I am not performing well, I am not at all performing up to the mark, I might, you know, people will judge me. और इसीलिए mindset होता है कि अगर मैं कुछ नया भी try करूंगी तो लोग क्या कहेंगे? How many times have you been into this trap? I'll tell you my example. I'm a PhD by, you know, education. I'm a scientist by profession. And when I told my people that I am venturing into my business, first thing was, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा?
तुमने साइंस ली थी, इतने साल पढ़ा था, उसका क्या होगा? इतनी सारी फीस भरी, उसका क्या होगा? इतने साल का एक्सपीरियंस था, उसका क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? दिस वॉज द फियर ऑफ जजमेंट. And then I just went away. Okay, it's okay. I have, because I am into this thing from last 1 year. I'm मैं पिछले 1 साल से इसमें हूँ. If your mother has been passive aggressive, how many times your mother was damn angry and she just said silently, वो चुप हो गई है, मुझे कुछ बात नहीं करनी है. She was just simply said, silently जाके, because that was her way of punishing to you, because you have done this thing. Okay, मैं नहीं बात करूंगी. If the murder was a passive aggressive, then definitely the child will have a lack of confidence. Reason is that the mother has never told why she is angry on the child, and the child is totally confused कि मैं मम्मी को ऐसा behavior क्यों है. How many times have you seen in the home, मम्मी कभी अचानक से खुश हो गई, अचानक से फट पड़ी है, किसी को नहीं पता कि मम्मी क्यों पड़ी है. Nobody has this idea. And same pattern you are repeating into your life if you are a married person. आप कभी भी खुश हो जाते हो और कभी भी फट जाते हो विद नो रीजन, नो एक्सक्यूजेस, कुछ नहीं है वो. हाउ मेनी टाइम्स यू आर रिपीटिंग द मदर्स पैटर्न यू आर हैविंग. इफ योर मदर इज अनअवेलेबल, डेफिनेटली वो है, वो घर, मतलब शी इज नॉट हियर टू लिसन टू यू, टू हैव योर, आपसे बात करे नॉट मीन कि बेटा दिन में क्या हुआ. बात करे बेटा हाउ डिड यू फील्ड, हाउ मेनी ऑफ यू फील just secured enough to share your deepest, darkest emotions with your parents. I am not. I still don't share my emotions with my parents. With them, I always have a strong boundary with both the parents. With my father and with my mother, दोनों के साथ है. पापा के साथ थोड़ा अभी जल्लब हो रहा है, मम्मी के साथ तो अभी भी वो है. She's not emotionally available to us. How many of just write in the chat box, me, or whatever thing, whatever the things. How many of you are confident enough to share your darkest of emotions with your parents? And it is the same thing. Anybody? And it's okay if you are not sharing, it's okay. But these are just the awareness I'm trying to bring it out, and just make sure how much you are repeating in this thing. Okay. And if the mother is co-dependent, because पहले 98% ऐसे ही होता था. I am also from the same family जहाँ पे mother काम नहीं करती, पापा काम कर रहे होते हैं. If they're into the codependent relationship, then definitely they are having the weak boundaries. Mother, it might happen, the mother don't want to stay with the father, but because they are financially dependent on each other, they end up into toxic relationship. They are living under the one roof, but they are not at all emotionally connected to each other. And these are the persons, जब ऐसे घर में बच्चा बड़ा हो रहा होता है, the kids will have weaker boundaries. How many times you feel exposed and you feel okay to put your emotions to your partners? Just write in the chat box. कितनी बार आप अपने पार्टनर से ओपन हो पाते हो, टेलिंग की विदाउट कि यार इस बंदे को मैं सब कुछ बोल सकती हूँ, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट. एंड द बिगेस्ट थिंग, विदाउट फियर ऑफ ये मेरे पास बैकफायर होके वापस आएगा. जजमेंट तो छोड़ दो, चलो एक बार जजमेंट देगा. हाउ मेनी टाइम्स यू फील कि मैंने इसको अगर कुछ बोल दिया, इट विल कम बैक, ये बैकफायर हो जाएगा मेरे पास में. कल को वो फाइल्स रिकॉर्ड कर ली जाएगी, तुमने उस वक्त ये बोला था इसलिए मैं आज ऐसा बोल रही हूँ. यू सेड एट दैट टाइम. Do you have that relationship because you're not putting your boundaries? Or how many times have you feel कि मैं थक गई हूँ, आप चाहते हो, आप बोलना चाहते हो कि यार मैं थक गया, मैं थक गई हूँ, बट स्टिल यू एंड अप डूइंग दैट वर्क बिकॉज यू हैव अ फियर ऑफ जजमेंट कि वो मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मदर इन लॉ क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या, बहुत कुछ हो रहा होता है. दीज आर जस्ट द साइंस ऑफ मदर वुंड एंड द इन अ फादर वुंड. एंड डेफिनेटली पेसिमिस्ट होता है, सेल्फ सैबोटेज में तो पर्सन होगा ही होगा. ओके, who is a child. Okay, Pragati, thank you so much, Pragati, for making the session so interactive. Coming to the father wound, definitely if your father is not approving, मतलब कितना भी कर लो, sometimes I do have fear of judgment. Yes, that's the biggest thing, the biggest flaw. अगर आपको fear of judgment है, आप कभी भी कुछ नया try नहीं करोगे. you know you will always end up having the thing कि मैं नहीं करना चाहूंगा या I don't want to go. फादर वुंड होती है, अगर फादर्स अनअप्रूविंग होते हैं, पीपल विल ऑलवेज एंड अप. कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सब कुछ कर रहे हो सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए. आई डिड माई होल पीएचडी जस्ट फॉर माई फादर्स हैप्पीनेस. मैं कभी पीएचडी करना नहीं चाहती थी, बट जस्ट बिकॉज ही वांटेड कि हाँ यार किसी को तो पीएचडी करना, मेरे घर में कोई हो, एंड ही वाज सो प्राउड कि मेरे बच्चे पीएचडी करे. आई एंड अप डूइंग माई 6 years of PhD, given my 6 years just for the sake of my fathers, which I'm proud of. I'm definitely proud of. So that is not there. So how many times, if the father is not approving, if the father is not affectionate,
पापा घर पे जरूर है, लेकिन पापा इमोशंस नहीं दिखाते हैं। पापा अपनी पापा की फिगर मेंटेन करने में, you know, he feels I have to be strong so that my kids will be strong, which is absolutely right. But एक 5 साल का बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि उसको पापा की स्ट्रांगनेस नहीं चाहिए, उसको पापा की हक चाहिए। They just want to go and hug their father. How many times have you felt that? And definitely not predictable hoga, because what, this very simple thing, because the father is not able to take strong decisions, the bachcha to kabhi kar hi nahi payega. And the not emotional apathy होगा, फादर मदर में से कोई भी इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो हमारे इमोशंस ना शट हो जाते हैं। बीइंग एन अडल्ट हम कुछ फील नहीं करेंगे, हम सब कुछ शट कर देंगे। हमें लगेगा कि ना मुझे खुशी फील होती, ना मुझे दुख फील होता, ना मुझे स्ट्रेस फील होता, ना मुझे कुछ नहीं होता, बस they just wait to die one day, because it's illegal to kill your own self. They are just बोलते हैं जिंदा लाश की तरह जीना। How many times you feel like यार मेरी जिंदगी में तो कुछ कहीं बस काटते रहो काटते रहो काटते रहो। That is the sign. And definitely if the father is not present, मतलब घर पे है, रिपोर्ट कार्ड देख लिया, लेकिन बच्चे के साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, पढ़ा तो रहे हैं लेकिन कहीं और है, नहीं आया तो झिकझिक करके 2 चापड़ लगा दी है। This is how the father would come, and definitely not gentle is again the fear. This is just one kind of father and motherhood which is there, which is coming from our mother and father side, and absolutely not at all their fault, because they have learned this method from your grandparents, from their mother and the father. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट वहां पे ना टेक्नोलॉजी थी, वहां पे ना अवेयरनेस था, ना वहां पे टूल्स थे, ना वहां पे टेक्निक्स थी कि उनको समझाया जा सके या उनको सिखाया जा सके या उनको अवेयर किया जा सके। तो उन्होंने हमें बेस्ट ही दिया है, क्योंकि उनके दिमाग में यही फिट है कि हम जो करते हैं वही बेस्ट तरीका है। दे हैव गिवन देयर बेस्ट टू अस इन ऑल देयर कैपेसिटीज, बिकॉज दैट इज द कैपेसिटीज उनके पास उतना ही अवेलेबल था। You be the changer, but definitely positive impact आया, negative impact आया है। But this inner voice जब chaotic feel करते हैं लाइफ में कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, stuck feel करते हैं, all those things, it's because of that thing. So bless your father and mother for what they have given to you. It's not at all their fault कि वो लोग aware नहीं थे, because तब था ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था। Not at all their own fault. So, but now you being aware into this journey, it is your duty to become aware and heal. It is your duty to help your own self. There's a term called learned helplessness. I don't know how many times आप लोगों ने घर पे ऐसे सुना है, लेकिन हम लोग over the period को learned helplessness, especially ये you might have seen in the people, in the case of women basically, being a woman I'm telling you, उनको लगता है कि हम दुखी ही अच्छे हैं। only victim mindset is the only learned helplessness. उन्होंने वही देखा है, take about any एक का full serial, सारी बहुएं जो है वो रो ही रही होंगी, इतनी बेचारी होंगी, they just showcase that particular thing. और you take our own society, अपने इर्द गिर्द देखना, जितने भी women हैं वो they might be highly blessed, उनके husbands, उनके parents सब कुछ अच्छे से कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे तो they always feel कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। That is called as learned helplessness. उन्होंने वही सीखा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, एंड क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव देमसेल्फ हैव डिसाइडेड कि हम कुछ नहीं कर सकते, यही जिंदगी है। एंड द माइंड जॉब इज टू मेक यू प्रूव राइट। आपका माइंड का दिमाग का काम ये कि अपने मास्टर को सही प्रूव करना। और ऐसे टाइम पे जब हम लोग कुछ करने भी जाएंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, स्टोरी विल कम बैक टिक। देखा मैंने तुम्हें बोला था ना, लर्न मतलब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। It will give you excuses of kid, excuses of time, excuses of husband, excuses of financial, पैसे नहीं है, excuses of कुछ भी देंगे, but they will not be able to just take that step. Now just ask your own self कि घर पे अगर आग लगी हो, घर पे बच्चा हो, you will take all the damn steps to save that child. आप हर घर का आप हर सारा इधर उधर जमीन आसमान एक कर दो, लेकिन आप उस बच्चे को बचाने की कसर पूरी की पूरी करोगे, एंड यू विल सेव दैट चाइल्ड। व्हाट अबाउट यू एज एन इनर चाइल्ड? अगर पता है लाइफ में फंसे हुए हो, यू आर गिविंग एक्स एग्जांपल्स टू योर ओन सेल्फ कि ये है ये है ये है, I will not heal, I will not do this thing, I will not try this thing. It's again because coming to your inner childhood, it is again because you are not feeling yourself worthy,
और क्योंकि आप अपने आप को वर्दी फील नहीं करो, क्योंकि बचपन में शायद बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट रहा है, बहुत ज्यादा बोला गया कि तुम ये करोगे तो ही वर्दी हो, 90% मार्क्स लेके आए तो ही वर्दी हो, गोरे हो तो ही वर्दी हो, सुंदर दिखते हो तो ही मैनेजेबल मटेरियल है, लीन हो तो ही तुम्हारे साथ शादी की जाएगी, इतना पैसा कमाते हो तो ही सोसाइटी में तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाएगी, पैसा कमाते हो तो ही तुम्हारी वैल्यू है, तो तुम घर पे बैठ के सिर्फ रोटियां तोड़ रहे हो। ऑल दिस बुलशिट, ऑल दिस बुलशिट, यू डोंट कैरी योर सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ नहीं। आपको लगता है कि मैं ये कर लूंगी तो मेरी वैल्यू हो जाएगी, ये कर लूंगी तो वैल्यू हो जाएगी, ये कर लूंगा तो वैल्यू हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट योर इनर चाइल्ड, बिकॉज बचपन में आपके लिए मायने रखती है, ये पैमाने रखती है कि ये होगा तो ही है, ये होगा तो ही है। एंड एज अ ग्रोन अप अडल्ट, अगर आप अपने लिए खड़े होते हो, इफ यू फील यू स्टैंड अप एंड टेल कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू, लाइक आई वाज बैडली वांटेड, आई नेवर सेड टू माय पेरेंट्स कि मुझे साइंस नहीं करनी है, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी अपब्रिंगिंग थी कि साइंस का बच्चा है तो वो इंटेलिजेंट बच्चा है। या अब मुझे आफ्टर डूइंग पीएचडी एंड आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 years एज अ साइंटिस्ट, मुझे लगता है मेरे को आर्ट्स कर लेनी चाहिए थी। आई एम मोर हैप्पी इन आर्ट्स, आई एम मोर हैप्पी इन साइकोलॉजी, दैट्स द रीजन आई एंडेड अप इनटू बीइंग अ लाइफ कोच, बीइंग अ हीलर, बिकॉज दिस इज व्हाट द साइकोलॉजी टीच अबाउट, यू नो। तब मैं नहीं बोल पाई थी, तो द गिल्ट इज लाइक अगर मैं बोलूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग, उनमें गलत नहीं, हम सामने वाले को सोच रहे हैं। बुरा ये है कि हम सामने वाले का इतना सोच रहे हैं कि अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। एंड एट अ सर्टेन एज ऑफ अ टाइम वी विल फील लाइक कि यार देखो तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, बट फॉल्ट इज उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, फॉल्ट इज तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट तुमने एग्री किया ही था उनके डिसीजन से, दैट इज द रीजन यू आर एंडेड अप इन दिस थिंग, सो स्टार्ट टेकिंग योर ओन डिसीजंस, कहने का मतलब ये है। इनर चाइल्ड वुड इन अडल्ट, इफ यू फील कि यार you are afraid to set the boundaries, if you don't feel like you don't say no, आप नहीं जाना चाहते हो शादी में फिर भी जाओगे, आपको खाना नहीं बनाना है फिर भी बनाओगे, आपको फॉर एग्जाम्पल वो मूवी नहीं देखनी है फिर भी देखोगे, बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट से नो। या पर्सन आपका पार्टनर या आपके मम्मी पापा या आपके इर्द गिर्द जो है दे विल फील बैड, यू यूज गिल्ट टू मैनिपुलेट, अगेन तुम गिल्ट यूज करते हो, देखो मेरे को इतना बुरा लगा तुम ये कर दो, यू नो, पैसिव एग्रेसिव दिखाओगे, तुम बात ही नहीं करोगे सामने वाले से हफ्ता 10 दिन 15 दिन, यू नो इट कुड बी एनीथिंग, और यू जस्ट फील लाइक मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे, यू जस्ट एंड अप, यू डोंट ब्रिंग द हेल्दियर कन्वर्सेशन, यू जस्ट एंड अप द कन्वर्सेशन, यू फील सॉरी और बैड, हमेशा खुद ही सॉरी, पता नहीं दिन में कितनी बार सॉरी बोलते रहोगे फॉर योर ओन, तुम्हारी गलती नहीं है फिर भी यू एंड अप फीलिंग, यू नो, सेइंग सॉरी एंड गिल्ट गैल्ट, एंड बिकॉज ऑफ these things you attract the similar kind of a people and similar kind of a situation in your life that will make you feel guilty, आपको वैसा ही फील करा रहे होते हैं। और फिर तो लगता है देखो मेरी लाइफ तो ऐसी है, लोग तो मेरे को यूज ही कर रहे होते हैं, मेरे को मेरा हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, दुनिया बहुत बुरी है, ये सारा डायलॉग तुम्हारी बाहर से निकल के आते हैं। मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, बिकॉज यू हैव दैट गिल्ट वुंड, दैट यू हैव दैट दिस थिंग, अगेन यू डोंट फील ट्रस्टेड, आपको लगता है कि दुनिया में मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, you don't feel safe, you don't open up, आप open up नहीं कर सकते हो, you are not opening up, ठीक है। so this happens most of the time with during last many things which we don't want to do, we end up doing, yes yes, just to maintain, yes, this peace, you know, peace of घर पे शांति बनाए रखने के लिए तो पता नहीं हम क्या ही कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, that's again because again this is a sign you are not standing up your own self, आप अपने आप के लिए खड़े नहीं हो रहे हो, क्यों नहीं खड़े हो रहे हो, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझते हो, आपको नहीं लगता है कि यू आर कैपेबल इनफ और यू वर्दी इनफ, मतलब आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे रेड कलर पहनना है मुझे येलो नहीं पहनना है, या मुझे एक वेस्टर्न ड्रेस पहननी है मुझे साड़ी नहीं पहननी है, और यू डोंट वियर दैट, यू नो इट कुड बी एनी सिंपल थिंग, आई वांट टू वियर दैट फंकी टी शर्ट, आई डोंट वांट टू you know go, I just want to go into my whatever the clothes I want to wear, और इन शॉर्ट तुम मुझे लौकी नहीं खानी है, तुम ये तक नहीं बोलते कि मुझे लौकी नहीं खानी है यार, you know that kind of suffocations are there, you definitely the person don't have the trust, वो afraid of getting hurt, और ये लोग जो होते हैं you know ये जिस भी रिलेशनशिप में जाएंगे हम पहले छोड़ देंगे, सामने वाले को कुछ भी हुआ कुछ भी गड़बड़ दिखा, these people always end up the relationship, be it a friendship, be it with with your partner, or be it with anything, because deep down they don't want to feel that hurt, deep down they don't want to feel that pain which they feel into the have felt into the childhood, उन्होंने बचपन में कभी फील किया था, उनको याद नहीं कब फील किया था, लेकिन उनको इमोशंस पता था, अरे लोग छोड़ के जाते हैं तो ऐसा होता है, they just don't want to feel that, get hurt,
they every time they need external validation. तुम्हें पता है कि तुमने बहुत ही खूबसूरत खाना बनाया, तुमने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है, मानोगे नहीं, लेकिन सामने वाला ने बोल दिया अरे वाह क्या खाना बनाया, सडनली स्माइल विल कम ऑन योर फेस, हाँ यार मैंने अच्छा खाना बनाया है. These people will always end up, having the external validation. उनको हमेशा external validation चाहिए होगा कि हाँ अच्छा stand up for myself, but once I do या Dhamendra, I'll just attend to these chats once the sessions are over. I started to stand up for myself, but once I do, someone would be unhappy in the family saying you don't care us. Yes, because this is the guilt. Guilt is, see, come back to here. Use guilt to manipulate. Guilt wound. गिल्ट यूज किया जाता है मैनिपुलेट करने के लिए टू बिहेव द वे विच दे वांट और यू विल यूज द सेम गिल्ट to behave the way you want the person to behave. I being awareness into this journey many a times I end up feeling using this guilt with my 5-year-old daughter ताकि वो खाना खा ले. दो एज अ मदर आई फील में मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है, मैं उसको बोली कि तू खा ले मम्मी को बुरा लगेगा, तू खा ले मम्मी को बुरा लगेगा, देखो तुमने खाना नहीं खाया. डीप डाउन आई नो, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग गिल्ट, टेलिंग फीडिंग दैट 5-year-old माइंड कि तुमने खाना नहीं खाया तो मम्मी को बुरा लगेगा. कैन यू इमेजिन, वो बेचारा बच्चा जो प्रोसेस ही नहीं कर सकता है, उसको कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में, उसको क्या लगेगा मैंने खाना नहीं खाया तो मैं मम्मा को बुरा लगेगा. आई एम मैनिपुलेटिंग द चाइल्ड, दो आई एम मैनिपुलेटिंग फॉर हर ओन बेटर सेल्फ which shall not be there. But just imagine how many times you have been manipulated by friends, society, parents, relatives, x number of time to behave and be in the set of the society. तुम हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारा प्राण प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ तुम्हें ऐसे ही चलना है. And that's the reason you don't take risk. That's the reason you don't try anything. You don't behave out of the box because तुम्हें पता है. See, एक चीज समझ लो, बच्चे को तब बच्चे में ताकत नहीं थी, वो 5 साल का था, 6 साल का था, 10 साल का था, 12 साल का था, शायद 3 ही देर तक था, उसमें उतनी ताकत नहीं थी वो तब खड़ा हो सके, स्टैंड कर सके. बट यू बीइंग अ फुली ग्रोन अप अडल्ट, you are now capable, you are now worthy, you are now strong, and you really have powers to change your life. So don't wait for somebody else who will come and save you. Nobody is coming to save you unless and until you are saving your own self. And the saving starts from awareness. मुझे क्या चाहिए, मैं बोलूंगी ना क्या नहीं चाहिए, सबके पास लिस्ट बन जाएगी, पूरे भर भर के लिख दोगे मुझे ये नहीं चाहिए. If I'll ask you now, tell me what do you want? एक्सेप्ट फ्रॉम कि हमें सोसाइटी के लिए करना है, हमें घर चाहिए, हमें परिवार चाहिए, एक अच्छी लग्जरी होटल चाहिए, ये सब चाहिए, ये सबको चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, विच इज वेरी नॉर्मल एंड विच इज एब्सोल्युटली यू ऑल नीड. बट डू यू फील आई नीड पीस? डू यू कैन यू टेल कि आई नीड कि मैं कभी लैक फील ना करूं, आई नीड अबंडेंस? डू यू फील कि I want someone to just listen to me without holding any judgments? Can you just I do can you just write I want love, and I want that unconditional love, that I am just love me the person I am, because I will love you the person you are. Can you have those needs? Can you tell I want a healthy body, and healthy body means mind soul. आपका माइंड बॉडी सोल में तीनों की बात कर रही हूँ, नॉट जस्ट अ सिक्स पैक एब और हैव दिस good outfit, good outlooking body. Or can I just accept myself the way I am? If I am fat, okay, I am happy that I'm fat, I accept my body like that, I need that acceptance. Can I accept my own self? These are the things a person shall have. Abundant would, of course, again a kind of a mood जहाँ पे you feel left out, you feel codependent. आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में होगे, लेकिन कभी भी उससे बाहर नहीं निकलोगे क्योंकि आप डिपेंडेंट हो. एंड द फर्स्ट फैक्टर डिपेंडेंस इज फाइनेंस, इसलिए आपको खुद के ऊपर फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है. कमिंग टू दैट थिंग, हेट बीइंग अलोन, ये जो हो रहा था, थ्रेटन टू लीव, कितनी बार सुना है? तुमने ये नहीं किया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, निकल जाओ मेरे घर से. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड योर पेरेंट्स टेलिंग दिस थिंग? किसी और को ढूंढ लेना, किसी और को मम्मी पापा बना लेना, किसी और को ये कर लेना, आई एम लीविंग दिस होम. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड टू दैट इनर चाइल्ड जो जब 4-5 साल 6 साल का बच्चा था, उसको क्या लगेगा कि यार अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी वजह से माँ बाप सफर होंगे. वो जो घर एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए था, उसको लगेगा कि इसकी कंडीशन है, आई कैन बी अलाउड ओनली इन दिस होम इफ आई एम अर्निंग वेल, इफ आई एम ईटिंग वेल, इफ आई एम डूइंग वेल, इफ आई एम स्टडिंग वेल, इफ आई एम वेयरिंग वेल. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैव दैट हैपन टू दैट child? एंड बच्चे को लगता है कि यार
मैं ये सब मतलब वो जो एक अनकंडीशनल एक घर एक ऐसा होता है जहाँ पे आप बिना किसी उसको एक्सेप्ट किए जाते हो, वो एनवायरनमेंट में बच्चों को लगता है यार ये कंडीशन है, मैं ये सब कंडीशन फुलफिल करूंगा तो ही मैं इस घर के लायक हूँ, तो ही मैं इस प्यार के लायक हूँ, तो ही मैं इस रिस्पेक्ट के लायक। That's how you're adult, and the person result ये होता है being an adult, you just end up slogging your life like anything. You will torture your body to go to the extreme stresses, extreme, kind of a things. Not being happy in the job, you will stay into the same job. Boss भले ही कितना भी वो करता हो, you will still stay. घर पे कितना भी कलेश होता हो, you will still stay. कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, you will still not apply for the job or something because you have a fear कि यार मैं फेल हो गई तो मेरे को इंटरव्यू में नहीं लिया तो, और उस वो क्यों आया, क्योंकि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी, मैं फेल हो गई। दैट फियर ऑफ फेलियर इज ऑलवेज देयर, वो लोग क्या बोलेंगे, फियर ऑफ जजमेंट, अरे इतने कब से दे रही है। लाइक आई एम अ नेट क्वालिफाइड, आई एम नेट क्वालिफाइड का मतलब ये होता है आई कैन बी लेक्चरर थ्रू आउट द कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो academically आई एम हाईली ब्राइट स्टूडेंट। PhD I am a net qualified, I can be lecturer across throughout my life to all the colleges of India। मैंने ये सब पढ़ाई क्यों की, क्योंकि ये था एवरी टाइम एक सिक्योरिटी तो है कि तुमने ये कर लिया तो मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा। आई एम एन ओवर अचीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम ओवर अचीवर ट्रॉमा, ये कर लो तो ये मिलेगा, ये कर लो तो ये मिलेगा। I am not using my PhD anymore from last 2 years. I am not using my net from last 2 years. But can you imagine the amount of stress I have given for that net exam, for that PhD, and the net I have qualified in fifth term, 6 terms होते हैं, 6 बार का चांस होता है, मैंने 5वीं बार में क्लियर करा, 4 बार मैं फेल हुई थी उसमें। So just imagine the 4 times I have to face my people and tell my bosses कि तुम छुट्टी लेती थी पढ़ने के लिए, every time सोने तुम फेल हो गई हो। Can you imagine the trauma and the thing I have given to myself to clear the exam, which is not at all mattering to me now because I'm just net qualified। क्यों किया, क्योंकि सब बोलते थे ये कर लो। Can you imagine that I was underplaying my own self and going to the pathway जो सबको होता है, definitely neglectful, struggle to let go, low self worth, unable to say no। So these are all the inner child wounds, these are just guilt, मतलब ये सिर्फ कुछ 4 तरीके के wound है, ऐसे बहुत सारे wounds होते हैं which I cannot cover definitely। ये पूरा 4 weeks का course होता है, that is inner child healing, which I take is again 4 week journey। I cannot cover the 4 week journey in just one class in just 1 hour, so please pardon me for that। Okay, and on that note, and yes, if you have the inner dialogue, अगर अपने आप को ये देखना, अगर ये बोलते हो आई एम रॉन्ग, आई एम टू ब्लेम फॉर एवरीथिंग एंड आई एम द कॉज ऑफ अदर पीपल सफरिंग, अगर ये लगता है कि मेरी वजह से सब दुखी है, योर इनर चाइल्ड इज गोइंग टू न्यू थिंग स्केयर्स यू एंड एंग्जाइटी। आप कुछ भी नया ट्राई नहीं करोगे, नए ना खाना ट्राई करोगे, ना नए लोग ट्राई करोगे, ना नए जगह ट्राई करोगे, ना नया पहनावा ट्राई करोगे, तुम्हें लगेगा नहीं यार मैं खुश हूँ। यू आर बिकमिंग सो कंफर्टेबल, अपनी स्किन में इतने कंफर्टेबल हो चुके हो वो फेलियर में, वो दुख भरी में, कि तुम्हें दैट्स अगेन लर्न हेल्पलेसनेस, कि तुम्हें लगता है कि मुझे निकलना ही नहीं, यू आर जस्ट हैप्पी इनटू दैट थिंग एंड देन यू जस्ट फील, लोगों को देखोगे और ड्रीम करोगे बट कदम नहीं उठाओगे। दैट इज द रीजन। Again, people pleasing behavior, how many times you just end up saying good things to the person which you really don't want to say। For example, there might be the people who want to say क्या lecture दे रही है तू सुबह सुबह, but you are still there in the class, just feel इसको बुरा ना लगे। How many times do you have that feeling? And definitely fear of rejection, you feel कि मेरा पास नहीं होगा, मुझे लोग कर देंगे, these are some of the voices जो आप अपने साथ dialogue कर रहे होते हैं। No clear boundaries in personal relation, definitely, and the people end up into toxic relationships। You might have to make others happy, और आपको लगता है कि मेरा ही काम है दुनिया को खुश बनाना, it is my only job to make people happy, and that is the reason आप हमेशा दूसरों की खुशी में लगे हो, इसको खुश कर दूं, उसको खुश कर दूं, इसको फलाने को कर दूं, डिप्लोमा को, मम्मी को कर दूं, पापा को कर दूं, बहन को कर दूं, भाई को कर दूं, बॉस को कर दूं, स्पाउस को कर दूं, बच्चों को कर दूं, एंड यू गेट एग्जॉस्टेड। आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन ही क्यों ना हुआ, चाहे वो 10 मिनट का उठ के मेडिटेशन करो, चाहे वो 10 मिनट घास में जाके चलना ही क्यों ना हुआ। You don't take those steps for your own self because you feel you are not worthy of it। आपको लगता है कि मैं वर्ती नहीं हूँ, मैं सबको पहले कर दूं, और आपको लगता है कि मैंने इन सबको खुश कर दिया ना तो ही मैं वर्थफुल हूँ, तो ही मैं अच्छा इंसान हूँ, तो ही मैं अच्छा बेटा हूँ, बेटी हूँ, बीवी हूँ, हस्बैंड हूँ, या एनीथिंग, फ्रेंड हूँ, whatever tag you want to give to your own self। This is how your inner child grown up as it shows up। And definitely you know it definitely believes आपको, आप बड़ा कभी सोच ही नहीं पाओगे। यू विल ऑलवेज फील मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी, मेरे पास पैसा नहीं है, अरे उसके पास तो बहुत सारा पैसा था, अरे उसके पास तो कुछ काम नहीं था। These are the excuses your mind will keep on, it will keep on judging you, आपको जजमेंट देते रहेंगे।
कभी भी आप you will not be able to live up to your full potential. Definitely coping through addiction and negative behaviors, habits, अब ये एक्सट्रीम में ड्रग्स में चला जाता है, और अगर नॉर्मल में देखें तो नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न में जाता है। आप दिन भर नेगेटिव ही सोच रहे होते हो। कोरोना आया था, कोरोना के अंदर कितने लोग नेगेटिविटी में बह गए, गवर्नमेंट खराब है, कोरोना खराब है, इतनी लाइफ चली गई, दे आर स्टिल डिस्कसिंग इवन आफ्टर 3 years, एंड द सेम पीपल, सेट ऑफ पीपल आर देयर, इवन द मास्क मेकर, जिन्होंने मास्क बनाए थे, जिन्होंने कोरोना में हजारों करोड़ों का बिजनेस कर लिया था। सेम सिचुएशन, टू डिफरेंसेस। ओके, यू चेस परफेक्शनिज्म, एंड दिस इज अगेन परफेक्शनिज्म, अगेन परफेक्शनिस्ट ट्रॉमा होता है। आपको लगता है कि मैं इतना कर लूं तो ही अच्छा है, ये कर लूं तो ही अच्छा, ये कर लूं तो ही अच्छा है। रीजन इज दैट बिकॉज यू आर रनिंग बिहाइंड द परफेक्शनिज्म, यू नेवर कंप्लीट द टास्क। आप कभी टास्क कंप्लीट ही नहीं करोगे, यू एंटर इन द प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको काम उठाओगे लेकिन वो काम कभी कंप्लीट ही नहीं करोगे, और क्योंकि आप काम कंप्लीट नहीं करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अगेन योर इनर वॉइस टेलिंग यू, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो किसी काम की ही नहीं हो। The inner voice started telling you that because you're running behind the perfectionism. Perfectionism is the biggest cause of procrastination. And क्योंकि आपको perfect है, perfection क्यों है? क्योंकि आपको fear of judgment है। Can you just relate? आपको लगता है कि मैंने अच्छे से perform नहीं किया तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, या वो सोसाइटी क्या कहेगी, या बॉस क्या कहेगा। You are just running behind the perfection, and that is the reason you are not showing up whatever the work you are doing. My slides might be unperfect. हो सकता है मेरी स्लाइड्स में बहुत कुछ गड़बड़ हो, बहुत कुछ, anything could be happen, but now I don't run behind the perfectionism. For me, getting the task is important, covering the task is more important. So people who are into the perfectionist trauma होते हैं ना, ये लोग ट्रक लोड ऑफ अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं, इतना स्ट्रेस लेते हैं अपने ऊपर कि कुछ कहने की हद नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये परफेक्ट होना ही है। बट द रियलिटी इज देयर इज नथिंग कॉल्ड दिस परफेक्शनिज्म, there is always a scope of better, there is always a scope of improvement. अब वो पेंटर की पेंटिंग ले लो, कोई ना कोई एक बंदा इस दुनिया में होगा जो उसको और बेहतर बना सकेगा। Same is with you or whatever you are doing. There is never ever perfectionism. There is always a scope of improvement. And of course, क्योंकि इन लोग अपने अंदर इतना भर के बैठे लगते हैं, इनको लगता है कि हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, हम खुद ही कर लेंगे। They are the people who never ever ask for help. क्योंकि उनको लगता है अगर हमने हेल्प मांग ली तो उसको लगेगा कि मैं कमजोर हूँ, उसको कमजोर लगेगा तो उसको लगेगा कि वो मुझे जज करेगा। And because of that, these people, accept to suffer rather than, take that feeling of help and all those things. And definitely overwhelming independence, they just feel like this can look like, repeating the narrative, I don't need anyone. And how many times you tell कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। All right, so this was all about, inner child healing, and that why it is important. Okay, experience the inner child. Thing is that now is the time to go for inner child healing. If anybody has any doubt, you can please unmute your own self and ask your own self, ask me before I go into the inner child healing. Anybody has any doubt? You can unmute. Or he, or you can also say कि यार बहुत heavy था. Anything. समझ में आया, नहीं समझ में आया, how was the experience, नया था, मजा आया, anything, anybody would like to unmute and share their experience? Yes, Dr. Manvi. Hi, good morning. Good morning, good to see you. Actually, it was very good. There are a lot of emotions that we carry from our parents, and even we don't know. Like my mother was working, so the same thing. I am not connected to her even now. I was connected to my father, but not with my mom. So unavailable and then non-predictable behavior was there, and not emotional. These three things I have noted down with respect to mine. And it is very, you explained it very well. These are the things, and like that we used to show to the people. Like in my case, it is the same overwhelming independence. It is there ki I don't need it because we don't want to trust the people या overburden हम लोग नहीं करते हैं that. So this is the main thing.
So now I come to know why it is happening to me. So thank you so much. Yeah. So Dr. Manvi, just note it down. Are you not, make sure that you are not repeating these behavior with your own kid. क्योंकि आप जो feel कर रहे Yeah. हो, just don't repeat it with your own kid. Be that trauma breaker in your generation. Like what I'm doing, I'm not, matlab, I'm helping, I'm bringing up the awareness. That's one thing. But before that, I decided that I'll be the chain breaker. Whatever the traumas I have carried into me through my parents, none of their fault. They were just not aware of the thing. But I will not pass the same thing to my next generation. At least minimum I can do Yes, for my yes. next generation. The minimum thing I can do. The reason Yes, I'm yes, into yes. healing is I just want to be a change maker. That's it. Okay. All right. So thank you so much for sharing your thoughts. And just we'll enter into quick inner child healing. You have to just follow my instructions. Yeah, thank you, dear. Thank you. Dhamrandra. Can you just tell your name? It's a little bit. It's Dhammaratna. Dhamratna. All right, all right. Thank you, Dhamratna. Thank you so much for telling. And this will enter into a beautiful inner child healing session. Okay, please close your eyes. All of you, please close your eyes. And if my music and everything is clear, just you can show me thumbs up. My voice and music both should be clear. Okay. All right. Thank you. Thank you so much, Pragati, for confirming. All right. Please close up your eyes. Spine straight. Sit comfortably. Take a deep breath. Inhale. Hold it for 4, 3, 2, 1, and exhale. Take a deep breath again. Just see the rise and the fall of your chest while inhaling and exhaling. Take a deep breath again. See the coolness in your chest while you just inhale the cool air. Hold it for 3, 2, 1, and exhale. Feel the warm air around your face. If any thoughts are coming, just let them go. Concentrate on your breathing. Just focus on the breath. How wonderful it is that we are breathing from ages, from years, but never gave attention to it. Keep focusing on your breath. As we enter into the inner child healing, the intention of today's inner child healing is to help you to connect with and heal your inner child. The inner child, the inner baby who might still be holding on to pain and hurt. The little boy or the girl who will help you remember what love and joy truly feels like. The little boy or the girl who wants nothing more than to be loved unconditionally. Please honor the child. Connect with the child and heal the child to get peace Let's begin
By focusing on the center of your forehead, begin by bringing your focus between your eyebrows. Feel the relaxation. Allow the healing to deepen. You are home. You are safe. If any thoughts are coming, they can wait for next 10 minutes. It's okay. You have been running throughout your life. You deserve this pause. You deserve this stillness. And you deserve this breathing. You deserve this little inner voice to be heard. Allow your eyes to get heavier. Unclench your jaws. Relax your cheeks. Lower your shoulders. Relax your arms. Relax your hands. Soften your stomach. Feel your legs and feet getting heavier and melt into deeper relaxation. Feel your body warm, relaxed, soft. Just be present there in the present moment. Now, imagine yourself as your younger version of 5 years or 6 years, or maybe smaller than that. Just feel and imagine your younger version. Just observe your younger version for a few seconds. Look at the hairs. Look at the small little body. Look at the eyes. Just notice the position, the attitude the younger version is carrying, the expressions. Take it all in this vision of your inner child. I want you to visualize your own self as your younger version, how you were as a young child. What are the voices you are hearing? Where are you? In the garden, in your home, or in school, or an open plot? Trees around you. What is the scent which you remember from your childhood? Is it the smell of tulsi, mango tree, or the sounds of a river, the sounds of birds? Now, imagine a giant bubble on one side of yours. A dark, smoky bubble. The younger version of you is just curious to know what's inside in the bubble. Take 5 steps ahead and you reach to the bubble. Just look closely inside.
And what do you recognize? Is the bubble showing sadness, pain, hurt, and fear? There are so many dark memories into this bubble. You might be seeing some flashes of those dark memories. It's okay to feel that way. Allow those memories to surface and get healed. You might see some mini movies. Let them surface. You have hold on to them from so long. It's time to release. Let all the emotions surface. Might possible that you are simply seeing the emotions floating within it. There is a heaviness in your heart. There is a disappointment, rejection, or fear. You might be feeling all together now. It's okay. Let them flow. This incredible little version of yours has created stories about each one of those emotions and memories. The story may sound, I am not good enough. The story may sound, I am not worthy. I don't matter to anybody of this world. Everyone can make fool of me. I have to make everyone happy to feel myself happy. I have to compromise because that's what life is. I cannot trust others because they will judge me. They will tell me, oh, you don't know this? So bad. Please hold the child's hand and tell, as you're adulting now, it's okay. It's okay to fail. It was not your fault. If the remarks, please hold the child, hug the child and tell, you don't deserve that punishment. You did your best in your capacity at that time. If it is about the failure, please hold the child and tell, win and failure are part of a journey. It's okay to lose sometimes. You don't have to be so hard on your own self. If you remember, you were not hurt. Hold the face of the child, look at his eyes and tell, I'm there to listen you. I'm always available to you. Please speak to me and talk to me. Whatever is going into your mind. You are worthy of your mind. You are worthy of being heard. If it is about comparison, please tell to the child,
that the best environment was not there for you to thrive. A fish cannot climb the tree. Same way, a bird cannot dive down into the deep ocean. So it's just a matter of time. It was not at all your fault. When you were compared, insulted, and humiliated for not expecting and raising up to the standard, what has been kept by the society. Just hold the child and see the child getting open up to you. Gently exhale, exhale, focusing on the breath. Release the heaviness of the emotions, the stories which this child is holding. Just hug her. Love the child. Hold the child. Accept the child. And as the child opens up, got this touch. See the bubble vanishing away magically. The bubble, the stories, everything evaporated. Step back. See the child again. The beautiful little child. Is feeling relaxed now. And the child just started running on a brighter bubble. A brighter bubble filled with laughter, filled with creativity, filled with dreams, filled with love and passion. As the child peeks up into the bubble, see the memories flashing up into your mind of happy memories. The memories where you laugh uncontrollably. The memories where you just jump into the pool of water, splashing away. The memories of swinging into the garden without looking at the watch. The memories of creating your own world with the colors. The memories of wearing that favorite lipstick of your mom or the shoes of your father. The memories of those friends making a group and just roaming around the whole day without caring for anything. The memories of you dancing or speaking on the stage. The memories of your teacher appreciating you, that first chocolate, or the cake baked by your mother. It might not be even cake, but we should just make some sweet thing dish for you and celebrate your success. Just sit back and witness it all. A smile spread across your face, and this is all yours. See the child smiling as there is someone who heard the child and was ready to play. Please go along with the child. Play with the child in that splash of water.
pool of water, on that swing, on that game, on that tolly of friends. Just go, play with them. This is you. Hold the child hand and tell it, I am from your future self. I am your adult version. And today, I invite you to come along with me. I'll take care of you. I will hear you. I will love you. I will give you the respect. I will show you worth. And I'm always there for you. Invite the child into your current life where more joy, more love, more creativity is there. The child simply lights up. See the sparkle in the eyes, how the child is smiling right from the soul and so happy that finally the child is at home. Bring the child to the present home. Hold the hand, bring it to the present home where you are staying. Open the doors with all your love and care. Hold it. Hold the hand. Make the child sit on the sofa chair of your current home. Keep your hands on her or his head. Just calm. Hold the face. Kiss on the forehead and tell, I'll just bring your favorite drink. The child looks at you, suddenly rush, running behind you and hug you. Turn around. Take the child in your lap and give a tight hug. And as you give a tight hug, the little child merges into your adult self, your current situation, your current present self. Welcome home. Whenever you are ready, you rub your palms, feel the warmth, put it on your face, and open up your eyes with a beautiful smile on your face. Please take a sip of water because lot of a healing was there, and you can share your experience. How was it? Please do share so that others can also learn. Please unmute your own self, and it's perfectly okay to feel those emotions. And if you have not felt enough, it's also perfectly okay. That's the sign you need a lot of work on your own self because those emotions have been so shut down, so numb, you have to feel anymore. Yes, anybody can unmute and share the experience. Anybody. Khushi, Prakriti, Dhamratna, Dr. Manvi, Bhagyashri, Nitinji, Jasmi, Shweta,
Were you able to meet your inner version, your younger version? How did it felt? Were you able to feel the emotions? Were majority of the emotions were sad, guilt, happiness, resentment, or they were of happy memories? That shows how your childhood. That shows how was your environment. Hi, Sonia. Pragati. It was good. Uh, इतना पूरा कनेक्ट नहीं कर पाई, but then it was good. I could like hand hold. मुझे वो खुद में छोटे बस उतना ही दिख रहा था, ज्यादा कुछ दिखा नहीं, but then it was good. And it Yes. was a lot myself. As you Yes. said, like many times it happens that हम लोग डिनायल में चले जाते हैं या कुछ है ही नहीं, तकलीफ ही नहीं है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं. So possibility is that. So we still have time to work on ourselves. Absolutely, absolutely. We are just so much of denial, so much of trauma is there that we are totally into denial कि ऐसा कुछ हुआ भी है. इसलिए हम feel नहीं कर पाते हैं. That's true. It take time, but definitely we'll get through it. Yes, anybody else? Nitin ji, thank you so much. It was satisfactory. What were your feelings? I couldn't reconnect completely. Thoughts were wandering here and there. That's perfectly okay. That's perfectly okay. You cannot concentrate because this was your first time experience of inner child healing and any kind of a healing. Healings take time because healing is a kind of a treatment. जो मैं आपको healing दे रही थी, it was kind of a treatment and treatment takes times. Thank you so much, Maya. Thank you so much, Pragati. Thank you so much for sharing your experience also. It takes time to feel, to go through, to treat that thing. So that's the reason it is healing. जब treatment डॉक्टर के पास जाते हैं तो time देता है, वो पता नहीं इतने कोर्स, मतलब इतने दिन का कोर्स है, इतने दिन का कोर्स है. That's how healing works. So it's perfectly okay. आपने कुछ फील नहीं किया है, कोई बात नहीं. थॉट्स आ रहे थे, that's the reason. आपका थर्ड है, जब इंसान का थर्ड आई ब्लॉक होता है तो इतने थॉट्स आएंगे, कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. The reason we say कि थर्ड चक्र इज ब्लॉक, क्योंकि हम कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते. एंड नहीं फील हुआ, कोई बात नहीं है. मेरे को भी कुछ फील नहीं होता. आई वाज टोटली नम जब मैंने ये इनर सर्कल हिल था एंड आई कुडंट फर्स्ट, मैं फर्स्ट उसमें कुछ भी फील नहीं कर पाते. बोले ये क्या ही है, कुछ भी नहीं है ऐसा करके. अमेजिंग सेशन, परफेक्ट स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग. यस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थिंग्स. नहीं फील हुआ, बी देयर ऑन दिस 5 year जर्नी. लॉट ऑफ वर्क हैज बीन देयर, लॉट ऑफ एनर्जी शिफ्ट हैज बीन देयर. एंड यू विल सी इट्स आप अभी जो दिन भर में आपका जो आगे का अपना प्रोडक्ट जैसे दिन जाएगा, यू विल सी like that. Anybody else? Nitin ji, how was the feelings about you? Were you satisfactory? Means what was your emotions? Happy emotions or some sad? And how was about you, Shweta, Dr. Manvi? Anybody can share. Hi. I was able to, but yeah, continue. Yeah, you can say. It's okay. Nothing, ma'am. Satisfactory is kind of, I was able to connect with my this childhood image, and somehow the mind was almost super active, and I was going with the inner me to a different places, like going on a beach and holding the hand of the. Wow. That's nice. That's really nice. That's nice. Good happy memories. It's okay. That's very. If you anybody felt overwhelmed, everybody feel like just like crying because मैंने 5 दिन के बाद मैं इतना रोई थी कि मुझे पता ही नहीं चला था. And crying is again a healing. There is no need to feel shy कि हम नहीं रो पाए. Yes, Dr. Manvi, how about you? Yeah, I could connect with my inner child and I danced with her, I patted her, and then I hugged her, give her support. I am always there with you, whatever you want to do. And she's telling me, you go there, you want to go there. And then she's telling you take your daughter there also. So we were enjoying the places where we want to travel. And one of the emotion that emotion that was buried inside, I was telling her. So that emotion was also there. So that I have told my inner child, yes, I am there and I will heal you. Okay, it's okay. So whatever you want, so I'll do for you. So it felt like, yes, it is because of that particular thing my inner child wants. Externally, maybe physically, socially, I don't want, but my inner child want to be healed. So Yes. thank you so much for realization, basically.
कि why it is happening. Some things we don't want to go to some places, yeah, you don't want to uh, recollect, or we don't want to do, but because inner child wants. So now I can connect with my inner child that she is wanting this kind of thing. So I'll surely fill it up. That's So true. That's the biggest thing. I'm so happy you got in the first, itself, first class itself. And yeah, yeah. You wanted to continue, Dr. Manvi? no, I have completed. Thank Okay, you. thank you so much for sharing. Okay, and Kushi is telling happy memories mostly, and I remember image of mine when I don't speak to anyone in childhood. Okay, yeah, thank you so much for sharing, Kushi. That's very good कि आपके में happy memories थी, but just ask your own self कि why you don't want to talk to anybody on this earth. क्या आप ऐसे मतलब क्यों नहीं आप बात करना चाहते हो? Is it the fear of judgment? आपको लगता है जहाँ से आपको लगेगा कि कोई मुझे सुनता ही नहीं है यार, कोई मुझे समझता ही नहीं है, क्या ही बात करनी है इससे, इसका तो यही यही एटीट्यूड होने वाला है, सारे ऐसे ही हैं। मे बी नहीं इज तो दिस द अभी रीजन? है चाइल्डहुड में, नहीं वो तो अभी है चाइल्डहुड की में, लाइक कोई भी मुझसे बात करता था तो आई वाज जस्ट मोर देन दैट, दैट दे वर आस्किंग माय नेम, जस्ट आई टोल्ड माय नेम एंड दैट्स इट. ओके, इट्स ओके, यू ये आई नो खुशी पर्सनली ऑल्सो, मैं खुशी को पर्सनली भी जानती हूँ, तो मुझे पता है वो फैक्टर कहाँ से निकल के आ रहा है. वी आर शेयरिंग द सेम ब्लड, वी आर शेयरिंग द सेम बॉन्ड्स, सो आई नो वेयर इट इज कमिंग, बट वी विल गेट थ्रू इट. पहली बात तो आपने नहीं बात किया है, तो हो सकता है कि बचपन में बहुत, क्योंकि मेरी भी कंडीशनिंग रही है कि बचपन से बोले कि ज्यादा बात मत करो, लड़कियां ज्यादा बात करती हुई अच्छी नहीं लगती है, चुप रहो. दिस वॉज द सेम थिंग टेल यू माई फादर स्टिल से. मैं क्लासेस ले रही हूँ तो ना सुबह सुबह पेट पे उनका मचा रहता है, कितना बोलती हो तू, इतना मत बोला करो. आज तक वो ये बोल रहे होते हैं कि इतना क्यों बोलती है तू. That is one way, but then over the year I realized कि नहीं, I have to speak it out, because what I am going through, there are many people who are going through that thing. I'll share my story sometime later, but just go through today's कि what is that one thing which help you, which is not allowing you to open up. Because अगर आप open up नहीं हो रहे हो ना, तो something is there inside you, some blockages अगर, I don't know what it is, but there might be something जहाँ पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली आपको पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्टली रहेंगे, इतनी बात करनी है, ऐसी बात करनी है, ये बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी है, या लड़कियां से बात नहीं करती है, तहजीब कुछ भी बोला जा सकता है, मतलब कुछ भी, मुझे नहीं पता क्या बोला गया या क्या चीज स्टक है यहाँ पे, बट देर आर हाईली चांसेस. एंड द रीजन, अब इसके आगे इसका आपकी जॉब लाइफ के ऊपर क्या होता है. स्टडी लाइफ तक चल रहा है, ठीक है, चलो बढ़िया चल रहा है, तब तक सिक्योर है. इसका सबसे बड़ा आएगा जॉब लाइफ के ऊपर. आप उठ के अपने बॉस को बोल नहीं पाओगे ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, मेरे को इसमें क्रेडिबिलिटी मिलनी चाहिए, मेरे को मेरा प्रमोशन मिलना चाहिए. यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ इन द जॉब लाइफ. रीजन, और उससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयर्स आपको हाईली एक्सप्लॉइट करेंगे. कोई या सीनियर ले जाएगा, बाजू वाला कोई क्रेडिट कोई और ले जाएगा, और आपको लगेगा छोड़ना है यार. आप शायद उसको छोड़ दोगे पीसफुल पीस के नाम पे, अरे छोड़ना यार. यू विल नॉट स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ एंड यू विल एंड अप स्लॉगिंग योर सेल्फ लाइक एनीथिंग, जहाँ पे तुमसे कम एक्सपीरियंस वाले, कम नॉलेज वाले, या कम कैपेबिलिटीज वाले तुम्हारे सर पे चढ़ के बॉस बन के बैठे होंगे. और फिर तुमने कहा यार मैं इनके लिए काम करती हूँ, बिकॉज दिस वाज द सेम मैटर विद मी. आई वाज इनटू अ जॉब जहाँ पे आई वाज अंडरपेड, एंड आई यूज्ड टू फील कि छोड़ना यार, क्या ही बोलना, वो तो बॉस है, बॉस तो हमेशा राइट ही होते हैं, क्योंकि मेरे पापा आज भी ये बोलते हैं, बॉस के साथ झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं, बॉस तो हमेशा राइट ही होते हैं. Because my father was in Air Force. I'm also from service class, मतलब हम लोग सर्विस क्लास कैटेगरी के लोग रहे हैं, तो पापा का हमेशा यही मानना है कि भाई जॉब बचा के रखो, बॉस से पंगा मत लो. अब इसके कारण क्या हुआ, आई वॉज ऑलवेज अंडर प्लेइंग, मेरे प्रोजेक्ट कोई और लेके जा रहा है, लिख मैं रही हूँ, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, प्रमोशंस किसी और के हो रहे हैं ना, वो लाइक व्हाट द हेल, कुछ कम से कम ये तो बोलते कि सोने ने लिखा है. This is what I needed. But then after into 1 year of journey, I literally politely say to my to my bosses, to my chairman, this has been done by me. First thing. Second thing, what I did, पहले मैं ना नहीं बोलती थी, इसने बोल दिया हाँ मैं कर दूंगी, इसने बोल दिया हाँ ठीक है काम हो जाएगा, इसने बोल दिया ये काम हो जाएगा,
ऑफिस वाले 6 बजे घर चले गए, मैं बैठी हूँ 8 के 8 बजे तक ऑफिस में। आई एम सिटिंग इन ऑफिस टिल 10 PM बिकॉज आई हैव बिकॉज मैंने तो हाँ बोल दिया, मुझे तो काम करना ही करना है। आई एम ओवर बर्डनिंग माई सेल्फ फॉर द लेस सैलरी आई एम गेटिंग विद रिस्पेक्ट टू माई सीनियर्स। एंड नाउ आई टेल क्लियरली दिस इज नॉट माई प्रोफाइल, I am not entering into it right now. I will complete my work and then I will take your work. बहुत पोलाइटली मैं बहुत बोलती हूँ कि ये मेरे जॉब का प्रोफाइल नहीं है। और उसमें क्या होता है, मैं दूसरों के काम करने में लगी रहती थी, मेरा मंथली टारगेट पूरा नहीं होता था, और फिर मेरे ऊपर आता था तुमने तो मंथली टारगेट पूरा नहीं किया। एट दैट टाइम मुझे लगता था इन लोगों ने जो मुझे काम दिया, ये लोग बोल क्यों नहीं रहे कि हमने इसको काम देके रखा था। Nobody used to stand up for myself, and then I realized I have to stand up for myself, and then I started saying no. So for you, Khushi, it is very good to feel जब तक हम कि हमें किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, but in the job life when you will enter into the corporate world, when you will enter into this world, because you are currently as a student, आप जब वर्ल्ड में एंटर करोगे आपको खुद के लिए खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग सिर्फ आपका फायदा ही उठाएंगे। You will always be underpaid, you will always be not giving the good promotion and all those things. So in short, get through it, work through it, हो जाएगा। See, it is all the thought, it is all the conditioning, and thought and conditioning can be changed. 2 साल में मोबाइल की टेक्नोलॉजी बदल जाती है। आई एम 36 ईयर से हम वो माइंडसेट लेके चलेंगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलनी है। You have to change your mindset, you have to be into the game, you have to work on your mind, you have to heal your own self, you get to know your core energies, what is my strength, what is my weakness, get to it and start working on it and play your game accordingly, then you will be unstoppable। फिर सक्सेस तुम्हें हर जगह मिलेगी। तो बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग जहां पे भी हाथ डालते हैं वो लोग वहां से सोना ही निकालते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे वेरी वेल नो कि उनको करना है, एंड दे आर वेरी डिटरमाइंड कि हम तो ये करके ही रहेंगे, है ना। So on that note, thank you so much for being there, thank you so much for sharing your views, and I'll see you tomorrow, and I'll open up the group for sharing your experiences। इसके साथ आज दिन भर में प्लीज अपने माइंड के ऊपर ध्यान रखना, अगर बचपन की कोई भी मेमोरी आ रही है, कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी विचार आ रहा है, वो बाय फ्लूक नहीं है, वो आपका इनर चाइल्ड आपसे कनेक्ट करना चाहता है। योर इनर चाइल्ड वांट टू कनेक्ट टू यू, प्लीज राइट इट डाउन। पानी पी के लिखना, just write it down whatever experience you had, and keep full day। आज दिन भर में कोई भी अगर बचपन की मेमोरी पॉप अप हो रही है ना, that's your inner child want to connect with you, your inner child want to talk to you, please talk to your inner child, write it down and share। I am opening up the group now to share your experience, to share your feelings, let us heal each other, because the more you will share, the more you will heal others। आप खुद भी heal होगे, आप दूसरों को भी heal करोगे। On that note, I'm ending the meeting for all, and I'll see you all tomorrow. And if you have any other thing, just do let me know. All right. All right.